Good morning everyone. Last time we have discussed about the type of redox reaction and today we are going to discuss how to balance a redox reaction. There are different methods for the balancing of the redox reaction. In your syllabus there are two methods for the balancing of redox, that is the oxidation number method as well as the ion electron method, that is also known as half reaction method. So we are going to start with the balancing ऑफ रिडॉक्स बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यानी हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से पहले बैलेंस करने जा रहे हैं. सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द बैलेंसिंग? सिर्फ ये सिंपल से स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे तो बैलेंसिंग आसानी से हो सकती है. व्हाट आर द स्टेप्स? द फर्स्ट वन, राइट द केमिकल रिएक्शन which you need to be balanced. Now find the oxidation number of all the elements. Afterward find that which of the element is undergoing the oxidation and reduction and balance those of the elements, only those of the elements which are undergoing oxidation and reduction. Now after balancing the element, find variation in oxidation state and cross multiply them. That means the variation of oxidation state multiply with the reduction half and variation in oxidation state of reduction multiply with the oxidation half. Now after cross multiplying, balance the oxygen by using the water and balance the hydrogen by using H plus in the case of the acidic medium and hydroxyl ion and water in the case of the basic medium. So we are going to just discuss one of the example, one or two of the example of the process, that is the balancing by the redox method. Then this is the reaction MnO4 minus reacting with iodide ion giving Mn plus 2 and iodine. The reaction is running under acidic medium, so we will have to balance under the acidic medium. So we are first written the chemical equation. Now find the oxidation number. The oxidation number for the oxygen is minus 2. For Mn, when you will calculate, it will be plus 7. Iodide ion, a charged species, equal to charge minus 2 and homoatomic molecule 0. This is the oxidation numbers. Now find the variation in oxidation state or the oxidation and reduction half. You can see that the Mn is undergoing the reduction, that means the oxidation state is changing from plus 7 to plus 4, and iodine is undergoing the oxidation. The oxidation number is changing from minus 1 to 0. The next step, balance the elements undergoing oxidation and reduction. Mn जा रहा है reduction में 1 Mn, again 1 Mn, तो यहाँ पे already balance है. But iodine balance नहीं है, 1 iodine atom and 2 iodine atom. So just balance it. So balancing iodine, it will be MnO4 minus plus 2 I minus gives Mn plus 2 plus iodine. Now after balancing, find the variation in oxidation state. What is the variation in oxidation state? From plus 7 to plus 2, the variation in Mn, that is the variation by 5. And in the case of iodide, minus 1 to the 2 minus 2 and 0 to the 0, variation by 2. Now cross multiply by the variation in oxidation state. That means multiply Mn half, that is the reduction half, with 2 and oxidation half with 5. So we are just multiplying. ये हो गया आपका 2 MnO4 minus plus 10 I minus gives 2 Mn plus 2 plus 5 I. Now what? In the next step, we will balance oxygen by water. Then how many oxygen is there on the left hand side? 2 MnO4, 8 oxygen, and on the right hand side there is no oxygen. So just balance the oxygen by water. It is 2 MnO4 minus plus 10 iodide ion gives 2 Mn plus 2 plus 5 I2 प्लस टोटल 8 ऑक्सीजन आपको बढ़ाने हैं, तो
8 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड कर देंगे 8H2O. Now oxygen is balanced. Finally, it's hydrogen. How many hydrogens are there? On the left hand side, no hydrogen, and on the right hand side, total 8 to the 16 hydrogen. So we are just balancing it. So it is 2 MnO4 minus plus 10 iodide ion. मैंने आपको पहले कहा it is in acidic medium, and in acidic medium we balance the hydrogen by H plus sign. तो यहाँ पे plus 16 H plus ion gives 2 Mn plus 2 plus 5 I2 plus 8 H2O. Now see whether the reaction is balanced or not. When you will see the balancing, 2 Mn on the left hand side, again 2 Mn balance, iodine 10 iodide ions and 5 I2, that means balance. Oxygen 2 4 ja 8, hydrogen 16, 8 2 ja 16, and finally charge कितना है 2 negative plus 10 negative, total 12 negative plus 16 positive. So the resultant is 4 positive on the left hand side, and on the right hand side 2 2 ja 4, again plus 4 charge. So the reaction is balanced. फिर से एक बार हम स्टेप्स देख लेते हैं. सबसे पहले क्या किया, राइट द रिएक्शन. नेक्स्ट स्टेप में हमने पता किया कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिए. ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे पता किया कि विच वन इज ऑक्सीडेशन हाफ एंड विच वन इज रिडक्शन हाफ. ये है रिडक्शन, ये है ऑक्सीडेशन. जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ उनको हमने बैलेंस कर दिया. यहाँ पे Mn ऑलरेडी बैलेंस था, आयोडीन को बैलेंस कर दिया, और बैलेंस करने के बाद हमने निकाला वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट. रिडक्शन हाफ के लिए 5, ऑक्सीडेशन हाफ के लिए 2. नाउ आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग ऑक्सीडेशन हाफ के वेरिएशन को रिडक्शन हाफ के साथ, रिडक्शन हाफ के वेरिएशन को ऑक्सीडेशन हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया, जिससे कि आपको ये इक्वेशन मिला. आफ्टर दिस इक्वेशन वी बैलेंस द ऑक्सीजन बाय वाटर. यहाँ पे 8 ऑक्सीजन एटम्स थे, राइट हैंड साइड में एक भी नहीं थे, तो हमने 8 वाटर मॉलिक्यूल्स लगा दिए. और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जितने हाइड्रोजन चाहिए थे, यानी 16 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए था, 16 H प्लस आयन लगा दिया. एंड इन दिस वे द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. रिडॉक्स मेथड में आपको अलग से चार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, चार्ज ऑलरेडी बैलेंस रहता है. वी आर सीइंग वन मोर रिएक्शन ऑफ दिस प्रोसेस, यू कैन नोट इट डाउन. This is the next example, that is the P4 on reaction with basic medium gives pH3 and HPO2 negative. हाइड्रोक्सिल आयन सिर्फ इसके बेसिक मीडियम को सजेस्ट कर रहा है, सो वी विल हैव टू सॉल्व दिस वन इन बेसिक मीडियम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. फॉर phosphorus it's 0, for this one -3 and +2, hydrogen +1, oxygen -2, hydrogen +1 and -2. Now we have got all the oxidation numbers. Now find the oxidation and reduction. यहाँ पे देख सकते हैं the phosphorus is turning from 0 to -3, that means reduction. And here you can see that the phosphorus is changing to +2, that is the oxidation. And when the same element undergo oxidation as well as reduction, the reaction is called the disproportionation reaction. Then this is the disproportionation redox reaction. Now in the next step, balance the element undergoing oxidation and reduction. एक प्रॉब्लम हो गई, इसको ऑक्सीडेशन के साथ रखें कि रिडक्शन के साथ रखें. हम इसको दोनों के साथ रखना पड़ेगा, एक के साथ रखा नहीं जा सकता. तो दोनों के साथ रखने के लिए हम करेंगे क्या, हम P4 को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं. देन इट कैन बी रिटन एज P4 plus OH minus gives PH3 plus HPO2 negative. Now balance the phosphorus for the oxidation and reduction half. So this is the reduction half and this is the oxidation half.
बैलेंस कर दें। टोटल 4 फास्फोरस यहाँ है तो हमने इसको कर दिया 4pH3 और यहाँ पे 4 फास्फोरस है, ये हो गया 4HPO2। फास्फोरस की बैलेंसिंग हो गई। नाउ फाइंड द वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। 0 0, I am just writing the oxidation state of those of the element which is undergoing oxidation or reduction. Now what is the variation? 0 4 ja 0 and 4 3 ja 12, variation by 12. And here 0 4 ja 0 and plus 2 4 ja 8, variation by 8. Now cross multiply. अब क्रॉस मल्टीप्लाई इतने बड़े नंबर्स करेंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। इस वैल्यू को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज द 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे पिछली बार किया था वैसे ही ऑक्सीडेशन हाफ के वेरिएशन को रिडक्शन हाफ के साथ, रिडक्शन हाफ के वेरिएशन को ऑक्सीडेशन हाफ के साथ। सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट विल बी 2p4 plus 3p4 plus OH minus gives 8pH3 plus 12HPO2 negative. Now we have cross multiplied, we have balanced the redox. Now balance the oxygen. How many oxygens are there? On the left hand side only one oxygen of the hydroxyl, and on the right hand side it is 12 to the 24. कितने ऑक्सीजन चाहिए? 23। किधर चाहिए? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो हम 23 ऑक्सीजन बढ़ा दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। नाउ आई एम राइटिंग P4 5 molecules 5p4 plus OH minus plus 23H2O gives 8pH3 plus 12HPO2 negative. Now in the next step we will have to balance the hydrogen. How many hydrogens are here? On the left hand side 1 and 20 to the 46, total 47. And how many hydrogens are here? 8 3 ja 24 plus 12, total 36. तो 36 हैं प्रोडक्ट साइड में, 47 हैं रिएक्टेंट साइड में, और जितने जहां पे बढ़ाने हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल से हम हाइड्रोजन बढ़ाएंगे और उतने ही हाइड्रोक्सिल से काउंटर करेंगे। यानी जितना हाइड्रोजन बढ़ाना है उतना हाइड्रोजन हम वाटर की हेल्प से बढ़ाएंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही हाइड्रोक्सिल से हम उसे काउंटर कर देंगे। सो सी 40 टोटल 11 हाइड्रोजन आर नीडेड ऑन द प्रोडक्ट साइड। P4 5p4 plus OH minus plus 23H2O gives 8pH3 plus 12HPO2 negative plus कितने चाहिए? 11, तो 11H2O। और जितना वाटर लगाया उतना ही हाइड्रोक्सिल यहाँ पे लगा देते हैं 11OH माइनस। जितने वाटर से बैलेंस करेंगे उतने से उसे काउंटर कर देंगे। अब इधर लिख देते हैं, थोड़ी सी स्पेस की शॉर्टेज हो गई। अब इसको हम वहां पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है? P4 5p4 प्लस, अब यहां देखिए 23 वाटर मॉलिक्यूल और राइट हैंड साइड में 11 वाटर मॉलिक्यूल हैं, माइनस कर देंगे तो 23 माइनस 11 इक्वल टू 12H2O प्लस हाइड्रोक्सिल 11 हाइड्रोक्सिल प्लस 1 हाइड्रोक्सिल, टोटल 12 हाइड्रोक्सिल, so 12OH minus. Now on the next side it is 8pH3 plus 12HPO2 negative। वाटर ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, सो इसकी कोई नीड नहीं है। सो सी वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। टोटल फास्फोरस 5 4 या 20, 8 plus 12 20, total oxygen 12 plus 12 24, 12 2 ja 24, total hydrogen 12 2 ja 24 plus 12 36, 8 3 ja 24 plus 12 36, and finally charge कितने चार्ज है यहाँ पे? 12 नेगेटिव, 12 हाइड्रोक्सिल आयन
and 12 HPO2 negative, again 12 negative. So in this way we balance the redox by using the oxidation number method. In the next video we will discuss about the ion electron method. Till then, bye, have a nice day.